This is the amazing Islam journey of a brave sister. Her name is Sharifa Carlo, and these are her words. The story of how I reverted to Islam is a story of plans. I made plans, the group I was with made plans, and Allah made plans. And Allah is the best of planners. When I was a teenager, I came to the attention of a group of people with a very sinister agenda. They were, and probably still are, a loose association of individuals who work in government positions but have a special agenda: to destroy Islam. It's not a governmental group that I'm aware of. They simply use their positions in the US government to advance their cause. One member of this group approached me because he saw that I was articulate, motivated, and very much the women's rights advocate. He told me that if I studied international relations with an emphasis in the Middle East, he'd guarantee me a job at the American Embassy in Egypt. He wanted me to eventually go there to use my position in the country to talk to Muslim women and encourage the fledgling women's rights movement. I thought this was a great idea. I had seen the Muslim women on TV. I knew they were a poor, oppressed group and wanted to lead them to the light of the 20th century freedom. With this intention, I went to college and began my education. I studied Quran, Hadith, and Islamic history. I also studied the ways I could use this information. I learned how to twist the words to say what I wanted them to say. It was a valuable tool. Once I started learning, however, I began to be intrigued by the message of Islam. It made sense. That was very scary. Therefore, in order to counteract this effect, I began to take classes in Christianity. I chose to take classes with this one professor on campus because he had a good reputation and he had a PhD in theology from Harvard University. I felt I was in good hands. I was, but not for the reasons I thought. It turns out that this professor was a Unitarian Christian. He didn't believe in the Trinity or the divinity of Jesus. In actuality, he believed that Jesus was a prophet. He proceeded to prove this by taking the Bible from its sources in Greek, Hebrew, and Aramaic, and showed where they were changed. As he did this, he showed the historical events which shaped and followed these changes. By the time I finished this class, my religion had been destroyed. But I was still not ready to accept Islam. As time went on, I continued to study for myself and for my future career. This took about 3 years. In this time, I would question Muslims about their beliefs. One of the individuals I questioned was a Muslim brother with the MSA. All praise be to Allah, he saw my interest in the deen and made it a personal effort to educate me about Islam. May Allah increase his reward. He would give me dawah at every opportunity which presented itself. One day, this man contacts me and he tells me about a group of Muslims who were visiting in town. He wanted me to meet them. I agreed. I went to meet with them after Isha prayer. I was led to a room with at least 20 men in it. They all made space for me to sit, and I was placed face to face with an elderly Pakistani gentleman. This brother was a very knowledgeable man in matters of Christianity. He and I discussed and argued the varying parts of the Bible and the Quran until the morning. At this point, after having listened to this wise man tell me what I already knew, based on the class I had taken in Christianity, he did what no other individual had ever done. He invited me to become a Muslim. In the 3 years I had been searching and researching, no one had ever invited me. I'd been taught, argued with, and even insulted, but never invited. May Allah guide us all.
So when he invited me, it clicked. I realized this was the time. I knew it was the truth, and I had to make a decision. Allah opened my heart, and I said, yes, I want to be a Muslim. With that, the man led me in the Shahada, in English and in Arabic. I swear by Allah, when I took the Shahada, I felt the strangest sensation. I felt as if a huge physical weight had just been lifted off of my chest. I gasped for breath as if I were breathing for the first time in my life. Allah had given me a new life, a clean slate, and a chance for paradise. And I pray that I live the rest of my days and die as a Muslim. Ameen. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये एक खूबसूरत वीडियो आप लोगों ने देख ली और तकरीबन 2-3 ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए इस वीडियो के, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आए होंगे। पहली बात तो ये कि जो इस्लाम को बदनाम करने वाले इदारे हैं या जो इस्लाम को किस्म इस्लाम की जड़ें काटने वाले और इस्लाम को तबाह करने वाले इदारे हैं, उनका तरीक़ाकार आप लोग देख लो। वो एक ऐसे औरत जो कि औरतों के हुकूक के लिए लड़ना चाहती है, उस औरत को अपने मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल करती है। यानी कि इस औरत को भी इन्होंने जो है कुरान और हदीस और इस्लामिक तारीख़ भी पढ़ाया, इसलिए ताकि वो अपने इन मालूमात को इस्तेमाल करे इस्लाम की तबाह करने के लिए। यानी कि आजकल जो आप लोगों ने औरतें देखी होगी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले, ये कहती है कि हम औरतों के हकूक़ के लिए बात करते हैं, लेकिन ये कहीं पर भी आप लोगों को नज़र नहीं आएगा कि ये कई औरतों के हकूक़ के लिए आए हो, बल्कि ये सिर्फ बेहयाई और ये जिस्म फरोशी को जो है वो फ़रोग़ देने के लिए ये सब कुछ कर रही है। तो इस औरत को भी इसीलिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस औरत में एहसास था। वो एहसास ये था कि जब सच और हक़ एक तरफ हो और मैं दूसरी तरफ हूँ, तो क्यों ना मैं सच और हक़ को कबूल करूँ। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे जो नाम नहाद लिबरल आंटियाँ हैं, इनको भी अल्लाह ताला हक़ की तौफीक दे ताकि वो भी इस्लाम कबूल करे और वो भी अपने आखिरत को बचा सके। तो इस तरीके से इनका एजेंडा है। वो मैं हैरान रह गया था, ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले जो कहानी था, इसमें वो कुरान की आयत भी पेश करते हैं कि मर्द और औरत बराबर है, और ये पेश करते थे। और उसके बाद बराबर है तो बराबर का मतलब ये है कि फिर मैं जैसा चाहूँ मेरी मर्ज़ी, और मैं सही बैठ गई, लो मेरी मर्ज़ी, वो चाय खुद पकाओ। और वो बेहया किस्म के जो नारे थे वो दर्ज थे उन बैनर्स पर। और इसके अलावा दूसरी बात ये कि इस औरत को इस्लाम में आने के लिए तकरीबन 3 साल की मेहनत करना पड़ी। 3 साल तक इसने तहकीक की, अल्लाह से दुआ भी मांगी होगी, जो कि इसने भी इस वीडियो में बताया नहीं है, लेकिन ऐसा ज़रूर किया होगा। और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा इस बहन को। ये सिर्फ इस औरत ने दोस्तों बज़ाहिर 4-5 मिनट में अपना जो वाक़या है बयान किया, लेकिन अल्लाह जानता है कि इस पर कितनी तकालीफ गुजरी होंगी। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, और जो पाकिस्तानी भाई तो दिल से खुश हो जाता हूँ कि हमारा कोई पाकिस्तानी भी अच्छा काम करता है, और जब भी कोई इस्लाम कबूल करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस एक वाक़े की बदौलत में दोस्तों इस तरह की खूबसूरत वीडियोस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और इसलिए मैं इन वीडियोस को मतलब के तर्जुमे के साथ आप लोगों के लिए भी लाता हूँ, ताकि इस तरह खूबसूरत वीडियो हर मुसलमान को पसंद आती है। और दूसरी बात ये कि इस तरह वीडियोस को शेयर करने का फ़ायदा ये होता है कि मैं ज़्यादातर कमेंट्स में देखता हूँ तो वो लोगों ने कहा होता है कि भाई इस वीडियो से मुतासर होकर मैंने भी इस्लाम कबूल किया। यानी कि सोशल मीडिया पर तो कोई हद नहीं है, हर मुल्क का हर मज़हब का इंसान फ़र्द वो वीडियोस देखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती है ऐसी वीडियोस, और काफ़ी ज़्यादा असर होता है। तो कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितना हो सके, और इस वीडियो को लाइक भी ज़्यादा करें। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जो लाखों में लोग देखते हैं, लेकिन उस पर लाइक्स इतने ज़्यादा नहीं आते। आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और मैं देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। इस वीडियो के बारे में भी अपना कीमती राय कमेंट में मुझे ज़रूर दें। वस्सलाम।